Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, that is the BH Law Entrance Exam by your coach Bakul Hanspal. This is Bakul Hanspal, the founder and the CEO of this very ethic startup. And in this video, we are going to start with indemnity and guarantee, which is a part of Indian Contract Act. अब जो पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसकी सीरीज जो है वो चलती रहेगी मेरे चैनल पर, जहाँ पर हम अलग अलग एस्पेक्ट से डील करेंगे, अलग अलग चैप्टर से डील करेंगे. ठीक है, सो बेसिक प्रिलिमिनरी पार्ट हो, चाहे फिर वो chapter 1 हो communication acceptance revocation, chapter 2 हो which is about voidability, then similarly contingent contracts, performance of contracts, and the sub chapters of it, and certain relations resembling those created by contracts which are quasi contracts, or breach which is like the compensation part, or like the penalty part. और ये जो चीज़ें जो सब रिपील हो चुके हैं, जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट के, वो तो चैनल पे आते रहेंगे. We're going to start with indemnity and guarantee. Strictly, I'm going to go by the due syllabus. Now, the Faculty of Law syllabus of Delhi University does not keep indemnity, guarantee, bailment, agency, pledge, right, in its syllabus. It only keeps the former part of the Indian Contract Act, but not the latter in the syllabus. But we're going to do this part in this very syllabus. So, if you are a student of Delhi University, or if you're a student of any college, जहाँ पर this is not a part of the syllabus, or let's say you are a CLAT aspirant or a law entrance exam aspirant, because personally I read the bare acts. In fact, we all read the bare acts when we were preparing for the law entrance exams. या फिर अगर आप ऐसे किसी कॉलेज में हो जहाँ पर आपको इंडेमनिटी गारंटी क्लास में समझ में नहीं आया या फिर खुद पढ़ने से समझ नहीं आया, तो आज हम इससे डील करने वाले हैं आज. सो वी आर गोइंग टू अगेन डिस्कस इट विद अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, विद कपल ऑफ केस लॉज, explanation, everything we're gonna do, everything simple word by word for you to understand it. Now what is indemnity and guarantee? अब एक मैं एक यूट्यूब शॉर्ट बनाया था या फिर इंस्टाग्राम रील बोल दो, लाइक दोनों ही जगह वो कंटेंट है. वी हैड अ वीडियो विच इज बेस्ड ऑन indemnity and guarantee. I would pin that on the I button for you to watch it. Otherwise, we're going to do this like from the bare act itself. It is just to give you a glimpse of what the concept is about. Now we'll start with section 124, that is indemnity. अब simple बात है, indemnity guarantee क्या होती है, simple शब्दों में हम बात करेंगे. ठीक है, indemnity is basically compensating somebody, right? Something happens due to which you are compensating that particular individual. आप उसको बस पैसे दे रहे हो जो भी उसको लॉस हुआ. What is guarantee? Guarantee is that you are guaranteeing that if this person defaults, again, if this person defaults on making the payment, then I shall give the payment to you. This is a guarantee that you are giving. Okay, so guarantee is only contingent upon the default of the payment. मतलब जब पेमेंट का डिफॉल्ट होगा, तीन पार्टीज आर इन्वॉल्व इन गारंटी, वो हम समझेंगे. जब पेमेंट का डिफॉल्ट होगा तभी आप जो आपने गारंटी दी थी, मींस यू आर द श्योरिटी, यू आर गोइंग टू मेक द पेमेंट. Indemnity means something happens, if some loss happens, then you are going to compensate that particular individual. Loss could be due to the promisor or it could be some third party. इसको हम समझेंगे. ठीक है, okay. Fine. So contract of indemnity define a contract by which one party promises to save the other from loss, right, which is caused by the conduct of promisor or by the conduct of any person. Is a contract of indemnity. Simple. Indemnity guarantee बहुत छोटा है, एजेंसी बहुत बड़ा है. ठीक है, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनीफाई बी. इंडेमनीफाई मतलब कॉम्पनसेट करेगा बी against the consequences of any proceedings which C may take against B in respect of certain sum of 200 rupees. If C files a complaint, or if C proceeds ahead with a case against B, whatever like expenses that B incurs, A is going to pay B with respect to those expenses. This is known as a contract of indemnity. Okay, this is what you are paying. For example, when I say insurance company hoti hai, let's say any accident is caused, so you have third party insurance in motor vehicles. So the motor vehicles is going to the insurance company is going to indemnify you, meaning it's going to compensate you. Simple as that, right? कोई गारंटी, आप गारंटी इन सेंस अगर मैं लीगल टर्मिनोलॉजी में बोलूँ, कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि इफ यू डिफॉल्ट ऑन मेकिंग द पेमेंट देन आई एम गोइंग टू कम अप इररिस्पेक्टिव ऑफ द लॉस. ठीक है, ओके. राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड. लेट्स सी. Promise in a contract of indemnity acting within the scope of his authority is entitled to recover from the promisor. It should come within the scope of the authority. If it comes outside, then definitely you are not liable. Let's say any kind of insurance company ने contract में लिखा है कि हम आपको indemnify करेंगे अगर कोई भी accident होता है, but we are not going to indemnify you whenever there is an act of negligence.
सो नेग्लिजेंस का केस हुआ, लॉस हुआ, उस केस में इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट गोइंग टू इंडेमनिफाई यू. फाइन. All damages which may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the promise to indemnity applies. So कोई भी damages हो जहाँ पर that बंदा would be forced to pay in respect of any case which is filed, with respect to any matter, right? Any case of cases like incurring the expenses of any case, जो हमने ऊपर देखा था, all costs which may be compelled to pay in any such suit if bringing or defending it, he did not contravene the orders of the promisor and acted as if it would have been prudent for him to act in the absence of the contract of indemnity, or if the promisor authorized him to bring or defend that particular suit. So if the promisor asked him to do something, ठीक है, और वो हमारे बेसिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नहीं लिखा था, बट कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन, प्रूडेंट पर्सन इसको करता. लेट्स से इमरजेंसी हो गई, फैक्ट्री में आग लग गई, और समहाउ मैंने क्या करा, जो बहुत सारा मैंने लाइक आस जो बिल्कुल पास में जो पानी का लेट्स से टैप था, उसको मैंने पाइप लगाकर यूज करा आग बुझाने के लिए, ठीक है. एंड मेरे को मना करा था प्रोमिसर ने कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, बिकॉज अगर आपने ये टैप यूज करा तो जो भी पानी स्टोर्ड है नीचे, तो पानी स्टोर खत्म हो जाएगा, और लेट्स से कोई विलेज में इमरजेंसी हो, विलेज में, तो वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगी. बट आपने फैक्ट्री बचाने के लिए करा, तो कोई भी ऐसा ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन करता अपनी फैक्ट्री को बचाने के लिए, वो पानी का यूज करता ही करता फायर के लिए. माना प्रोमिसर ने मना करा है, इन दैट केस स्टिल आप प्रोमिसर जो है वो आपको इंडेमनिफाई करेगा फॉर वट एवर लॉसेज यू सफर्ड. All sums which he may have paid under the terms of any compromise of any suit, if the compromise was not contrary to the orders of the promisor and was one which would have been prudent for the promisee to make in the absence of any contract of indemnity, or if the promisor authorized him to compromise the suit. It could be any kind of compromise, like compromise, let's say claim was of 500 rupees, but now you are sorting the claim, let's say, to 200 rupees. So in that case you would be indemnified by the promisor only to the word to the tune of 200 rupees, because now आपने वो अमाउंट को कॉम्प्रोमाइज कर लिया, उसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है. अब दिस वाज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बहुत छोटा है, ठीक है, सिर्फ दो सेक्शन लिखने हैं, विच इज 124, ठीक है, एंड 125 विच इज द राइट्स ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर व्हेन sued. Indemnifier is the person who indemnifies, who promised to pay the compensation. Indemnified is the person who is indemnified by the indemnifier. And the other name of indemnified is indemnity holder. ठीक है? Okay. This was the thing. और इससे मेरे को कुछ लगता नहीं है बताने लायक. We can start with guarantee in the next part. Till then, stay tuned. Bye.